सबको जेम्स की yeah. James. Good. So before we share what we have to share today, और जो बांटना है उससे बांटने से पहले so I'd like to thank you for praying for Radhika's mother. बहन की माता जी के लिए प्रार्थना करने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं. The BP, she's more or less all right now. अभी लगभग ठीक ही है. Yeah, and Radhika's father is a little unwell, cough and all that, but pray for them that apart from they become all right in the body, the burden is also sometimes they should come to know the Lord. और उनके पिताजी को थोड़ी तबीयत खराब थी, खांसी जुकाम, तो उनके लिए भी प्रार्थना करें कि वो ठीक हो जाए. वो ये भी है कि वो प्रभु के पास आ जाए. Yeah. So I thought today I will share something that children, children know they ask strange questions. बच्चों के बारे में हम जानते हैं कि वो अजीब-अजीब सवाल पूछते हैं. And some of the questions are interesting. और कुछ सवाल बड़े रोचक होते हैं. Some are complicated. और कुछ बड़े कठिन होते हैं. But most of them are very interesting. लेकिन ज़्यादातर सवाल बड़े रुचि रखने वाले होते हैं. And you all know my daughter Grace talks a lot. और ग्रेस बहुत इस बारे में बातें करती है. And she has a lot of questions. बहुत सारे उसके पास सवाल भी होते हैं. I remember the time when she asked me a question, Papa, I have a question for you. उसने मुझसे एक सवाल किया था कि मेरे पास आपके लिए एक सवाल है. And she said, does God love men more than women? कि क्या परमेश्वर पुरुषों से ज्यादा प्रेम करते हैं बजाय स्त्रियों के? I said, why? मैंने पूछा क्यों? He had 12 disciples. कि उनके 12 चेले थे. All of them are men. वो सारे पुरुष थे. No one is women. उनमें कोई स्त्रियां नहीं थी. It's a good, valid question. और एक सही सवाल था. Now, usually when she asks tough questions, और आमतौर पे जब वो कठिन I have a very simple answer. एक बड़ा आसान जवाब देता हूँ. Ask your mother. ये माँ से पूछो. Yeah, and so that is usually my answer. But so I was generally talking to her. तो मैं इस तरह से उनसे बात कर रहा था. And of course, when you think of it, we don't know why. और जब आप सोचते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कारण नहीं पता. If I look at it from a very practical aspect, यदि आप इसे व्यवहारिक तौर पर देखें, it's simpler to have just men because then women in there traveling, no place, sleeping here and there becomes, I think, more difficult as a group to travel. Is my logical answer? हाँ, तो मेरा ये मानना था कि स्त्रियां वहाँ पर हो तो वहाँ पर जगह-जगह जाना, जगह-जगह रुकना, ठहरना उनके लिए शायद मुश्किल होता. I didn't tell her that. I just was thinking about it. ये बस मेरी सोच थी. Yeah, and the other could be that men do have a special place in the Bible because they are considered the head of the family. और बाइबल के अनुसार कि जो परिवार का जो सिर माना जाता है पुरुष को, तो उनको एक अलग स्थान होना जरूरी था. And in this so-called new woke world, as the lines are blurring, everyone says everyone's equal and we are better than men and so on and so forth, it is something that we can sort of talk about a little bit. और जैसे आज की दुनिया में जैसे ये बातें चल रही है कि सब बराबर हैं, पुरुष से सब समान है, तो ऐसे में बाइबल से कुछ हम बातें देखते हैं. So I managed to answer with these things, with a couple of things. तो इन कुछ बातों को जोड़कर मैं उसका जवाब दे पाया. I told her, see, what is the most important thing in this whole world? मैंने पूछा कि इस पूरी दुनिया में जो सबसे जरूरी चीज वो क्या है? What the most important? सबसे जरूरी चीजों में से एक. Important as in आवश्यक? No. Sorry. Not in terms of जरूरी. It was the most important thing. ये एक आवश्यक चीज है. And we more or less decided the most important thing is the Lord. और हमने इस बात को फैसला किया कि प्रभु ही सबसे आवश्यक चीज है. And what is the most important thing about the Lord was the fact that he was born. और प्रभु के विषय में जो जरूरी बात है कि वो एक Everything in history points to the fact that one day the Savior will come for the world. इतिहास की सारी बातें कि उस बात के ऊपर और ले जाती है कि एक दिन उद्धारकर्ता आएगा. And that Jesus who will be born, he will die. और प्रभु यीशु जन्म लेंगे, उसके बाद उनको मरना होगा. And then he will rise again. और फिर वो जी उठेंगे.
That probably is the most important thing in the whole of history. ये पूरे इतिहास में सबसे जरूरी आवश्यक बात है। The rest are all things adding or working towards that. और बाकी सारी बातें मिलकर इस बात की ओर काम करती है। And I was telling her, in all these things, all these three things, इन तीनों बातों में the birth, the death, and the resurrection, उसके जन्म, मृत्यु और जी उठने में, more or less the first to know, the Lord spoke about these, the first to sisters. कि प्रभु ने इन बातों के बारे में सबसे पहले बहनों से ही बात की। When the whole world didn't know, was waiting for the Messiah, one day the angel Gabriel came and told Mary, you have a son who is the Redeemer. जबकि पूरी दुनिया उस मसीहा की प्रतीक्षा कर रही थी। The most important news in the whole world was first told to a sister. The sisters must have a very special place in the Lord's eyes. तो पूरी दुनिया में जो सबसे जरूरी संदेश जो था वो पहले बहनों के पास लाया गया, तो उनका एक अलग मुख्य स्थान है। We read that we know that where it is, right? Luke. हम जानते हैं इस बात को। Secondly, till the last moment that the Lord was dying on the cross and he gave his breath away and it was more or less finished, there's a special mention again and again that the sisters, that the women were there who had followed him for a long time. और उसकी मृत्यु के समय जब अंतिम सांस उसने ली, वहां पर भी बार बार इस बात को लिखा गया है, कुछ बहनें जो उसके पीछे पीछे उसके साथ चल रही थी। And the rest, maybe the men went away. और हो सकता है वहाँ जो पुरुष थे वो शायद भाग गए थे। Or they were scared that Peter and I had to run off because वो पतरस और बाकी चेले शायद डरे हुए थे या दूर थे। Yeah. And when the Lord rose again, जब प्रभु यीशु जी उठे, the first to find out again was Mary. Mary was the first to find out that wonderful news that death is swallowed up in victory. We have new hope. The first to know that again was a sister who goes and tells the whole world that the tomb is empty. तो प्रभु यीशु के जी उठने का सुसमाचार भी सबसे पहले बहनों को ही मिला कि वो कब्र खाली है, जय ने मृत्यु को निगल दिया है। So I told her the most important news the Lord usually tells the sisters first. तो मैंने बताया कि जो सबसे जरूरी समाचार शुभ संदेश जो होता है वो पहले बहनों को दिया गया। The brothers will do the manual work. भाई जो काम करते हैं। But I think the important one, the Lord entrusts the sisters. लेकिन जो मुख्य बात है उनमें शायद प्रभु बहनों में इंटरेस्ट रखता है। I think she was more or less happy with that. तो शायद उससे खुश थी। At some level, I also feel that more or less is the structure. मैंने भी इस बात से तसल्ली पाई। And today we want to talk about one such sister. तो ऐसी एक बहन के बारे में because that is also what I am reading in my daily portion. हमने प्रतिदिन दैनिक भाग में भी मैं वही पढ़ रहा हूँ। So I thought we can think a little about a sister called Ruth. तो बहन रूथ के बारे में हम देखेंगे। And today I think the portion has a lot of names that are amongst us as well. और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो हमारे बीच में भी हैं। And when you think of Ruth in the Bible, you can't think of our dear sister Ruth there. और जब रूथ बाइबल के बारे में बात करते हैं, at some level, if you want to see how she was, think of Ruth. अगर आप कल्पना करना चाहते हैं कि कैसी थी तो रूथ के बारे में। So okay, I'll ask you a question. What is special about Ruth or the book Ruth? रूथ की पुस्तक या रूथ के बारे में जो खास बात है वो क्या है? Anyone has an answer? कोई बता सकते हैं? What is special about this book? इस पुस्तक के बारे में खास मुख्य बात क्या है? Anything? Anyone? It can be anything. No worries. कुछ भी बता सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। Ruth is, yes, she's a non-Jew. आगे वो गैर यहूदी थी। And I think there are only two books in the Bible which is after non-Jews. बाइबल में दो पुस्तकें हैं जो गैर यहूदियों के विषय में। One of course is Ruth. एक रूथ। Anyone knows the other one? और दूसरी? Esther was a Jew. Esther was a super Jew. Yeah. Anyone else? Second book which is about based on a non-Jew. Didi? Okay, I think that we can safely say the next other book I think is Luke, because Luke, I think he was definitely not a Jew. और दूसरी पुस्तक जो लूका, you can find out, let me know. Huh? I think he has a Greek ancestry, but I'm just saying he was a non-Jew. वो यहूदी नहीं था। So the only book in the Old Testament who was based on a non-Jew.
तो पुराने नियम में एकमात्र पुस्तक है जो Anything else? यहूदियों के विषय पर आधारित है। Ruth's name is only name in the, not the only name in the genealogy. I think there's Rahab as well. And both of them are non-Jews, I think. Yeah, it's interesting. Yeah. I know it's good to marry non-believers, but yeah, it is something that we can talk about. Yeah, so Ruth's name is in the genealogy of Jesus Christ. प्रभु यीशु की वंशावली में भी रूथ का नाम है। So it is an interesting book, and it is about a very important person. It's about a sister, and I think we can see what the story. All of us, lot of us know about the story. और बहुत सारे लोग इस कहानी के बारे में जानते But हैं। I will just recap it in about 5 minutes. लेकिन इसको फिर से एक बार देख लेते हैं 5 मिनट में। So there was a man called Elimelech. तो एलिमेलेक नाम का एक आदमी था। He used to stay in Bethlehem, वो बेथलेहम में रहता था and he had a wife called Naomi, और नाओमी उसकी पत्नी थी। and he had 2 sons. 2 बेटे उसके थे। Now, when you think of Naomi, तो आप नाओमी के बारे में सोचते हैं we cannot think of Sister Emmanuel. भाई मिखाइल की। Naomi also, I think, means pleasant and beautiful. और नाओमी का अर्थ है कि खुश और सुंदर। And pleasant. प्लेजेंट। Pleasant in Hindi is happy, not happy. I'm sorry, I'm just, yeah. So if you want a face to think when you think of Naomi, तो अगर आप सोचते समय किसी चेहरे को देखना चाहते of course, तो Emmanuel thinks about all the time. We can also think today. हाँ मैनुअल तो हर बार सोचते हैं तो ये बात। Yeah. And he had, so they, 3 of them, there was a famine in their own land. तो वो 3 लोग थे और उनके देश में अकाल पड़ा। And so they decided to go to a place called Moab. तो मोआब जाने का उन्होंने निर्णय लिया। And they go to Moab. मोआब वो गए। And unfortunately, Elimelech dies in Moab. वहाँ पर एलिमेलेक की मृत्यु हो गई। And then the sons marry girls from Moab. मोआब की स्त्रियों से लड़कियों से उनके बेटों ने शादी की। So chances are they were Jews, they married non-Jews, which is technically not allowed. हाँ तो यहूदी होकर गैर यहूदी से शादी कर रहे थे तो ये अलाउ नहीं था। And then the sons also died. और फिर उसके बाद वो बेटे भी मर गए। So now there is Naomi. अब वहाँ पर नाओमी रह गई थी। And the 2 daughter-in-laws. और जो उसकी 2 बहुएं वो रह गई थी। 3 widows. तो 3 विधवाएं। In a strange land. एक परदेशी देश में। And then Naomi hears that there is now the famine is over in Bethlehem. तो बेथलेहम में अब जो काल वो समाप्त हो चुका था। And she wants to go back. और फिर वो लौटना चाहती थी। So as she wants to go back, she tells the daughter-in-laws. जो वो लौटना चाहती थी तो उसने अपनी बहुओं से कहा I want to go back. मैं जाना चाहती हूँ। And why don't you guys, you're young, and why don't you find husbands here? कि तुम अभी जवान हो तो यहीं पर कोई पति ढूंढ लो। Instead of me going back and I can't have a son that can marry them. कि मैं जाके जो तुम्हें और बेटे तो नहीं हो सकते इसलिए कि तुम्हें शादी करनी। So you stay back. तो वो You stay back. कि तुम ठहरो। I'll go back. मैं जाती हूँ। And out of them, both of them, and one of them says, no, okay, I'll stay back. दोनों में से एक ने कहा कि ठीक है मैं यहाँ रुक जाऊंगी। And another called Ruth says, no, I'm going to go with you. और दूसरी जो रूथ थी उसने कहा कि नहीं मैं साथ जाऊंगी। And then Ruth and Naomi, they return back to Bethlehem. और रूथ और नाओमी बेथलेहम में लौट कर आई। And there is this wonderful, gracious, strong man called Boaz in Bethlehem. बेथलेहम में बोआज नाम का एक भला आदमी था। Handsome, था, strong था, kind, दयालु। If you want to, if you want a face to think how that man looked like, अगर आप सोचना चाहते हैं कि वो कैसा दिखता होगा, of course we have a plan. Yeah. So there is Boaz. बोआज है। And Ruth marries Boaz. और रूथ ने बोआज से शादी की। And out of them they have a son. Obed is not here today, but they have Obed. और दोनों का Obed। And Obed has Jesse. Obed से यिशै। And Jesse has a son called David. और यिशै से दाऊद। So that is the story of Ruth in short. तो ये रूथ की एक कहानी है संक्षेप में। Okay, now there are about 7 characters here in the story. इस कहानी में 7 किरदार हैं। I'm sorry, we're supposed to read chapter 1 and a little bit of chapter 2. I don't know whether we have time. 1 और 2 अध्याय में पढ़ने वाले थे। But that is more or less a story
लेकिन ये एक कहानी है। Oh, and I think we haven't prayed today, and I've got a signal from the back. You haven't prayed, Vikash. So let's have a word of prayer. प्रार्थना करेंगे। Our Lord, Heavenly Father, thank you for this wonderful time. Thank you, Lord, for this great privilege we have to call upon the true and living God. And Lord, while we were far from any hope, we had we were cursed in a way, but that was taken out from that cursed place and that hopeless place into a new hope and a new place, uh, a new a new beginning. And it's also a new song that we praise you, we thank you. This morning out at the piano, we pray, Lord, watch me, watch us, and all of us by your precious blood. And whatever we share, maybe not of us, but it is from heaven. And it be a blessing unto all of us. Lord, it is impossible with ourselves, but by your grace, it's not possible. And we pray, Lord, as we gather here, help us, Lord, that we be attentive, that whatever we hear may be a blessing unto us now, tomorrow, and every day of our lives. And Lord, in all things, Lord, you are leading on high. Not only here, Father, that people gather across in different places, on one that servants, given the word about satisfy your people, Lord. And those who are home, gathering gracefully and not well, our trust in our feet. And Lord, thy word will go forth and restoration, grace, compassion, cleansing in the life of all. Money the power of darkness in which we offer prayer thanks to thee. Amen. No, I have written prayer here, but now I'm sorry, I'm getting older, I guess. यहाँ पर लिखा हुआ था प्रार्थना करनी है, लेकिन भूल गया। Yeah. So there are about 7 characters here, I think. 7 किरदार यहाँ पर हैं। So we'll try and look quickly. We have about half an hour, so I think it should be okay. हाँ, तो हम जल्दी से उनको देख लेंगे। The first, of course, the man called Elimelech. सबसे पहला एलिमेलेक। Now, if you read in Ruth chapter 1, verse 1, can you read please? रूथ 1 अध्याय उसका 1 वचन में, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। Yeah. So Elimelech lived in Bethlehem. तो एलिमेलेक बेतलेहम में रहता था। And he lived in the times of the judges. वो न्यायियों के समय में वहां पर रहता था। So now, if you read the last verse of Judges, that sums up the life and the time of Judges. हाँ, और न्यायों की पुस्तक का अंतिम वचन हम पढ़े तो उनके समय में कैसा वहां पर था उसके बारे में जान पाते हैं। Please. न्यायों की पुस्तक 21 अध्याय 25 वचन, उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। There was no king in Israel. इजराइल में राजा नहीं था। Every man did what was right in his own eyes. जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही करता था। That was life in the times of the judges. ये न्यायों के समय में वैसा जीवन था। Yeah. And because people were doing whatever they thought was right, they were not following after God, but they were following what they wanted to do. हाँ, तो क्योंकि जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था, इसलिए वो परमेश्वर का पीछे नहीं चल रहे थे, वो अपनी मर्जी कर रहे थे। And when that happens, let us read that verse in Deuteronomy chapter 11, verse 16 and 17. व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। When people did what they thought was, or what they wanted to do themselves, जब लोग ऐसा सोचते थे कि this is what the Lord had told them. तो प्रभु ने ऐसा उनको बोला था। Chapter 11, verse 16 and 17. व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 16 और 17। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे और तुम उस उत्तम देश में जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। Yeah. So if you are unfaithful, the Lord is going to stop the rain and there's going to be a famine. अगर तुम विश्वास योग्य नहीं होगे तो प्रभु आकाश को बंद कर देगा और भूमि उपज नहीं देगी। And that is what we see here in Bethlehem.
there's a famine. और यही बात हम यहाँ बेथलेहम में देखते हैं कि वहाँ अकाल पड़ा। And the irony of it is Bethlehem means the house of bread. और बेथलेहम का जो अर्थ है कि वो रोटी का स्थान या रोटी की जगह है। Imagine in the house of bread, तो there इस is no food. तो इस रोटी के जो घर में वहाँ पर कोई भोजन ही नहीं है। That is the situation. ये ऐसी स्थिति है। And Elimelech means God is my king. और एलिमेलेक का अर्थ है प्रभु मेरा राजा है। Yeah. And this is the time where there's no king in Israel. और ये ऐसा समय है जहाँ इस्राएल में कोई राजा ही नहीं। And Elimelech means God is my king. और एलिमेलेक का अर्थ है प्रभु मेरा राजा है। And when the famine happens in Bethlehem, the house of bread, और जब बेथलेहम यानी रोटी के घर में अकाल पड़ा, Elimelech, whose name means God is my king, does not look to God for help. His eyes turn to the world towards Moab. और एलिमेलेक जिसका अर्थ है प्रभु मेरा राजा है, वो प्रभु की ओर ना देखकर दुनिया की ओर देखता है। He does exactly what the people in the time of Judges are doing. Everyone was doing what was right in his own eyes. उसने वही किया जो न्यायियों के समय में लोग करते थे, जैसा उसको ठीक जान पड़ा वैसा उसने किया। He didn't look to God. प्रभु की ओर उसने नहीं देखा, He looked to Moab. मोआब की ओर उसने देखा। Now let me tell you a little about Moab. मोआब के बारे में बताता हूँ। Moab doesn't have a good history. मोआब का एक अच्छा इतिहास नहीं था। Moab started from Lot and his daughter. लूत और उसकी बेटी से मोआब की So the starting point of Moab is in a bad place. तो मोआब का जो आरंभ है वो एक गलत जगह से आया। Secondly, I think we should read that verse in Deuteronomy chapter 23 verse 3. व्यवस्था 23 अध्याय उसका 3 वचन। We realize Moab is cursed. हम देखते हैं यहाँ मोआब शापित है। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 3 वचन, कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। One more. इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरमन हरेम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी। Yeah. So for 10 generations they were supposed to be cursed. तो 10 पीढ़ियों तक वो शापित थे। So Elimelech is looking to these cursed people who have a bad history for help. तो ये एलिमेलेक ऐसे शापित लोगों की ओर देखता है जिनका एक खराब इतिहास रहा है, इनसे मदद की उम्मीद रखता है। And the Moabs worshipped a god called Chemosh. और केमोश नाम के देवता को वो उपासना करते थे। And apparently that god demanded children to be sacrificed. और उस देवता की मांग रहती थी कि वो बच्चों की बलि चाहता था। And in a strange way, और एक अजीब तरीके से Elimelech lost his two sons. It was almost like the sacrifice to Chemosh happened in a way. कि एलिमेलेक ने अपने दोनों बेटों को खो दिया, एक तरह से कि वो बलि चढ़ गए उस केमोश के लिए। Yeah. The second person that we have is Naomi, of course. और दूसरा जो किरदार है वो नाओमी है। And Naomi, as you said, means beautiful, pleasant. नाओमी जिसका मनोहर और सुंदर है। Now Naomi also went with her husband from Bethlehem to Moab. नाओमी भी अपने पति के साथ बेथलेहम से मोआब को गई। I don't know whether she supported her husband. मुझे नहीं पता कि उसने अपने पति को सपोर्ट किया। Chalo, let's get excited. Maybe that's a good place. New places to see, new things to wear, new food. I mean, some excitement. कि उत्साहित होकर कि नई जगह है, नए कपड़े, नए भोजन वहाँ पर है, तो शायद बड़े इसे उत्साह से खाओ। Or she would have told her husband, maybe it's not a good idea. या अपने पति से कहा होगा कि शायद ये अच्छा विचार नहीं है। And Elimelech said, "You keep quiet, we're going." और एलिमेलेक ने कहा कि तुम चुप रहो, हम जा रहे हैं। We don't know exactly what is the situation. हम नहीं जानते कि कैसी स्थिति रही होगी। But she did go along with Elimelech and the two sons. लेकिन वो अपने पति और बेटों के साथ उसके साथ गई। And because she went, क्योंकि वो गई, it's a new land. नई जगह है। There's new friends, there's new culture, there's new God. It's everything, the new food. Everything is entirely different for her. तो सब कुछ उसके नया और कुछ सब अलग था, नए लोग, नए भोजन, नई संस्कृति। And over a period of new life, because she lost her husband. और नया एक तरह से जीवन हो गया क्योंकि उसने अपने पति को खो दिया। And new daughter-in-laws. नई बहुएं उसे मिली।
So she was in a situation far away from home, in a strange place, and stuck after losing the three most important men in her life, her husband and two sons. तो वो ऐसी जगह थी घर से दूर और दूसरी जगह में अपने पति और दोनों बेटों को खो दिया था। And there is one more thing about Naomi, which is, I'm not very sure whether it's right or wrong, but that is what she did. और नाओमी के बारे में एक और बात है, मुझे नहीं पता कि वो कितना ठीक है कितना नहीं है। Naomi finds out in verse 6. Can you read that, please? Yeah, Ruth chapter 1, verse 6. रूत 1:6। तब मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की स्तुति लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। Yeah. So Naomi found out that there is bread again in Bethlehem. तो नाओमी को पता चला कि वहाँ फिर से उसके देश में भोजन है। So she said, I think we should go back. तो उसने सोचा कि अब लौट चलना चाहिए। And then they start back. तो फिर वो लौटने के लिए तैयार हो गए। And then she tells her daughter-in-laws, और उसने अपनी बहुओं से कहा, I am going back. मैं लौट कर जा रही हूँ, You are young. तुम जवान हो, I think you should find husbands and stay back. तो तुम अपने लिए पति ढूंढ लो और यहीं ठहरो। Now, this advice, ये जो सलाह थी, I think is on the whole, if you look at it, objectively you look at it, it is a very good advice. अगर इसको बुनियादी तौर पर देखें तो ये एक अच्छी सलाह थी। In Israel, what happened was, if the husband died, if there was a brother, the lady would have to marry the brother. इजराइल में क्या होता था कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसका पति का भाई उससे शादी कर लेता था। Now, both the sons of Naomi were dead. अब नाओमी के तो दोनों बेटे मर चुके थे। And Naomi says, I can't have more children so that they will grow up and they will be married. It is like, it is not going to happen. वो कहती है कि अब मेरे इतनी क्षमता नहीं है कि वो Yeah. I can't have children now. और बच्चे नहीं कर सकती कि वो बड़े हों और फिर तुमसे शादी करें। So she says, you all are young. तुम जवान हो, Whole life is in front of you. पूरा जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। Find husbands here अपने लिए पति ढूंढो and marry, और शादी करो, settle down, और सेटल हो जाओ, and live happily ever after. और खुशी खुशी जीवन बिताओ। Practically, it seems good advice. तो व्यवहारिक तौर पर ही एक अच्छी सलाह। But then if we look at it spiritually, यदि आत्मिक रूप से देखें, so I'm not sure it's the best advice to give. मैं नहीं मानता कि अच्छी सलाह है। So it is a little confusion in my head. ये थोड़ा कंफ्यूजन है। Yeah. But लेकिन Naomi, and there's one more thing about Naomi, which is again a little suspect. नाओमी के बारे में एक और बात है जो I think we should read that verse. In verse 20, 20 वचन, chapter 1. Yes. This 20 is when Naomi goes back now to Bethlehem. नाओमी अब वहाँ बेथलेहम And everyone's excited. Naomi is back. Naomi is back. Let us go and talk to him. और सब बड़े उत्साहित हैं कि नाओमी लौट आई है, चलो उससे बात करें। 20 वचन, उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। Now she said, don't call me beautiful, don't call me pleasant, call me bitter. वो कहती है कि मुझे मनोहर या सुंदर मत कहो, और मुझे मारा कहो या दुखियारी, Because, क्योंकि read that last part. सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। She puts all the blame on God. उसने सारा दोष प्रभु पर डाल दिया। I guess at some time when we go through a bad patch, we say, God has really punished me. जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो कई बार हम प्रभु को कह देते हैं कि प्रभु ने मुझे दंड दिया है, प्रभु ने जो किया मेरे साथ ठीक नहीं किया। प्रभु ने ठीक नहीं किया। Yeah. But if you look at it, लेकिन आप इसको देखें, they left the house of bread and went to a cursed land. वो अपने उस भोजन का घर छोड़कर एक शापित देश में गए, And there lost her husband, वहां पर अपने पति को उन्होंने lost her खो दिया, sons. बेटों को खो दिया। And technically she should have said, I shouldn't have left Bethlehem. उसे ऐसा कहना चाहिए था कि मुझे बेथलेहम छोड़ना ही नहीं चाहिए था। Instead of saying, the Lord has dealt very bitterly. बजाय ये कहने कि प्रभु ने मुझे बड़ा दुख दिया है। But having said that, इसके बावजूद Naomi is a good girl. नाओमी एक अच्छी Yeah. स्त्री,
There's 2, 3 reasons I'm going to tell you why she's very, very good. दो तीन बातें मैं बताता हूँ क्योंकि Number one, when she heard that there is bread again, she wanted to return. पहला जब उसने सुना कि वहां पर फिर से भोजन है तो वो लौटना चाहती थी Or she could have stayed back in Moab with the new cultures of Moab and the new places to eat in Moab and the new friends of Moab. No, she said, I have to go back. हाँ वो चाहते तो मोआब में रह सकती थी नए लोगों के साथ नए कल्चर के साथ लेकिन वो उसने निर्णय लिया कि मुझे लौटना ही है That's number one. ये पहली बात है Secondly, दूसरा she had told her daughter-in-laws about the Lord. हाँ उन्होंने उसने अपनी बहुओं से प्रभु के बारे में बात की Yeah, because she tells, the Lord bless you. कि उसने वो कहते कि प्रभु तुम्हें आशीष दे And she says when later on when Ruth says, बाद में जब रूथ कहती है when she tells Ruth, you also go back. कि जब रूथ से कहती है कि तुम भी लौट जाओ Ruth says, entreat me not to leave you. And don't tell me to leave you. हाँ कि मुझे लौटने के लिए Or to return from following after you. कि तेरे पीछे चलने से मुझे ना रोक Where you go, जहाँ तू जाएगी I will go. मैं जाऊंगी Where you lodge, जहाँ पर तू ठहरेगी I will lodge. मैं वहाँ ठहरूंगी Your God तेरा shall परमेश्वर be my God. हाँ तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा That means Naomi had told the daughter-in-laws who were non-believers about the Lord तो नाओमी ने उन गैर विश्वासी बहुओं को प्रभु के बारे में बताया था and had, in a way, won one of them to the Lord. और एक तरह से कि उनमें से एक को प्रभु के बारे में That is a really fantastic thing to do. तो ये बड़ी अच्छी बात है So we have to really give Naomi a lot of points for that. तो उसके लिए हमें 9 पॉइंट्स देने पड़ेंगे And the most important thing, तो सबसे the daughter-in-laws love the mother-in-law, and that is a fantastic thing. कि बहुएं उससे अपनी सास से प्रेम रखती थी ये एक बड़ी अद्भुत बात है Any mother-in-law who has daughter-in-laws, they go to hug and weep and kiss to say, no, we will follow after you. Rather than daughter-in-law will say, "Ja rahe ho aap? Bye-bye," is, I think, is must be a very good name. हाँ तो Sorry. एक सास हो उसकी बहुएं उसको गले लगाए उसको कहे कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगी तो बोल बजाय कि एक ऐसी बहू हो जो बाय बाय कहे So that mother-in-law must be a really, really good mother-in-law. So Naomi, तो very good, up there. Yeah. सास बहुत अच्छी सास रही होगी तो नाओमी से इसके लिए बड़ी अच्छी होगी So in a way, in a very dark patch in Naomi's life, she's again turning back with one soul won for the Lord and returning back to Bethlehem. हाँ तो एक बड़े इस कठिन समय से जो गुजर कर वो फिर से लौट कर प्रभु के पास प्रभु की जगह में लौट रही है There's this verse in Psalms, right? भजन में एक वचन है And there's weeping for a night, but joy comes in the morning. कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन दिन में आनंद That is almost like in the life of Naomi, you can feel that. और नाओमी के जीवन में इस वचन को पूरा होते हैं हम देख सकते हैं Now we have the 2 sons. दो बेटे हैं The 2 sons were Mahlon and Chilion. Yeah. Verse 2, I think. दूसरा वचन There were 2 sons, Mahlon, हाँ मैलोन और किलियोन Chilion. There were 2 sons that they had. दो बेटे उनके थे We quickly go through them. They are not important. उनको जल्दी देख Mahlon means sick. मैलोन का मतलब बीमार Chilion means come to an end, or he's wasting by the time. He's wasting every day. किलियोन का अर्थ है कि वो प्रतिदिन वो घटता जा रहा है And that's what happened to them. और ऐसा ही उनके साथ हुआ Yeah. They were sick and they were wasting every day. Their lives were a waste because from Bethlehem they went to Moab and it came to an end. हाँ वो प्रतिदिन वो घटते जा रहे थे बीमार थे और जब वो मोआब में गए तो वहाँ पर वो खत्म हो गए And as I said, it's almost like they were in a way sacrificed to the gods of Moab. या एक तरह से वो उसको बलि चढ़ गए उसके मोआब के And one more thing we have to remember is the fact that because of the lack of spiritual nourishment, I guess, the sons could not bear any fruit. It died. The seed fell on very shallow land. हाँ और क्योंकि उन्हें आत्मिक पोषण नहीं मिला था इसलिए वो ऐसे बीज के समान थे जो ऐसे जमीन पर गिरे कि वो फल नहीं रहा पाए But then one thing that we keep in mind that's very important with in the lives of the 2 sons. लेकिन इन बेटों के जीवन में जो एक जरूरी बात थी वो है So it was a decision of the father to leave the house of bread
to go to a cursed land. ये पिता का फैसला था कि उस भोजन के क्षेत्र को छोड़कर वो ऐसे शापित देश में जाए। And that decision affected the life of the family within the two sons. और इस फैसले ने उसके पूरे परिवार को उन बेटों समेत प्रभावित किया। So we have to be very careful as a family because our decisions can affect the decisions of the family. तो परिवार के तौर पर हमें बड़े सावधान रहना चाहिए कि हमारा एक निर्णय पूरे परिवार को प्रभावित कर सकता है। And at times can bring about death in their lives, and that is not a very good thing. और आने वाले समय में एक मृत्यु को हमारे परिवारों में ला सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। So let us make our decisions prayerfully in a way that the children, the fruits may bring more fruit rather than bring about death. हाँ, इसलिए हम प्रार्थना के साथ अपने फैसले करें ताकि वो हमारे परिवार के लिए लाभ। Now we have Orpah, one of the daughter-in-laws. तो उनमें से एक जो बहू थी वो ओरपा। Apparently Orpah means fawn or a small deer, and also means the back of the neck, which means return back in a way. हाँ, ओरपा जिसका अर्थ एक छोटी Deer. हिरनी, छोटी हिरनी या पीछे का भाग। Yeah. So in a way, it signifies to return, turn her neck back. तो एक तरह से ये है कि उसने पीठ घुमा ली थी। Now we read verse 7. और 7 वचन में When Naomi hears that is bred back in Bethlehem, जब नाओमी को पता चलता है कि वहाँ बैतलहम में फिर से भोजन, they all three of them start back. वो तीनों ही लौटना शुरू कर देती है। But at some point, when Naomi says again, why don't you go back? लेकिन आगे जाके नाओमी कहती है कि क्यों तुम लौट क्यों नहीं जाते? Orpah weeps bitterly. ओरपा रोने लगती है। And then she kisses Naomi. और नाओमी को चूमती है। And then she says, maybe sadly, but she does go back to Moab and doesn't return with Naomi. और शायद बड़े दुख के साथ। Let us read that verse, right? 15? No, 14. तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। See, now let us, 2 minutes we'll take. Both of them were in a cursed land, and there was a curse under them, both Orpah and Ruth. दोनों ओरपा और रूत जो दोनों थी वो ऐसे शापित देश में रह रही थी। And there was generations, till 10 generations, they had no entry into the house of God. और 10 पीढ़ियों तक उनको प्रभु के भवन में आने की अनुमति नहीं थी। And now God has sent them a messenger. और प्रभु ने अब उन्हें एक संदेश देने वाला in the form of Naomi. नाओमी के रूप में, there is salvation for you. Let us go back to Jerusalem. Go back to Bethlehem. कि तुम्हारे लिए वहाँ पर उद्धार है, लौट कर चलो बैतलहम में चलें। I think there is a chance for you. तो तुम्हारे लिए एक मौका है, अवसर है। From curse, we might turn that curse into a blessing. श्राप को अब आशीष में बदल सकते हैं। We are almost hopeless in the situation where we are widowed, we have no one else. हम ऐसी निराश स्थिति में हैं जहाँ पर हम विधवा हैं और कोई नहीं है हमारे। There is still hope in Bethlehem. बैतलहम में हमारे लिए आशा है। And they start on the way. Orpah starts to go back. ओरपा ने भी शुरू कर दिया था लौट कर जाना, but she didn't go the entire way. लेकिन वो पूरी तरह से वहाँ पर नहीं। Somewhere on the way, मार्ग में she fell back. वो वापस आ। I think her intentions were all good. हाँ, वो जो उसकी इच्छा थी वो ठीक थी। And she really loved the promise. She really loved the mother-in-law. She really loved the gospel. हाँ, वो अपनी सास से प्रेम रखती थी, सुसमाचार से प्रेम रखती थी। But at some point, the things of Moab, the family, the friends, everything else, the comfort, she decided maybe maybe it's good for me to stay back. लेकिन एक समय उसको जो अपना परिवार या उसके जो मोआब के जो आराम है, सुख है, वो उसके सोच के वो शायद उसको रुकना ठीक लगा। There's a verse in the New Testament. Let us read that. Luke chapter 9, verse 62. Let's read it all together, please. लूका 9 अध्याय verse 62. 62 वचन All together, please. लूका 9 अध्याय उसका 62 वचन सब एक साथ पढ़ेंगे। लूका 9 अध्याय 62 वचन। यीशु ने उससे कहा, No man having put his hand to the plow and looking back. वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। This is what Jesus said. ये प्रभु यीशु ने कहा, You're all ready for the journey, for the destination. You're going somewhere.
कि आप अपनी यात्रा को शुरू करते हैं, You have made up your mind to do the work, आप सब कुछ काम कर लेते हैं, मेहनत कर do लेते the हैं walk, और चलना भी शुरू कर देते हैं, and then you look back, फिर आप पीछे लौट कर मुड़ कर देखते हैं। and that's what Orpah did. तो यही और पाने की, And that is the end of Orpah. We don't hear about her anymore. तो ये और का भाग यहाँ पर खत्म होता है, आगे उसके बारे में नहीं देखते। And there is, of course, Ruth. फिर आगे रूथ है। Yeah, a wonderful lady. हाँ, एक अद्भुत स्त्री है। Ruth means friend. रूथ का अर्थ है मित्र। And there is this verse in the Bible and in Proverbs which says, "And there is a friend which sticketh closer than a brother." और नीति वचन में एक वचन है कि जो मित्र है वो भाई से भी नजदीक रहता है। Yeah, sometimes they say a friend is thicker than blood. कि, कि Friend, sometimes good friend is better to have than a brother who was related in blood but not a. जो खून का रिश्ता रखने वाला भाई है उससे भी बेहतर एक दोस्त होता है जो अच्छा होता है। Ruth was a Gentile, of course, तो रूथ यहाँ पर एक गैर यहूदी थी and as we discussed, she was under the curse, और वो शापित देश में रहती थी। and at some level, you know, because in the society that was, she was a woman. She was a woman, हाँ, और एक ऐसे समाज में और कि वहाँ पर वो स्त्री थी and women didn't have the same standing as men in the society those days. और उन दिनों में जो पुरुष और स्त्री के अंदर भेदभाव था। On top of that, she was a widow, उससे बढ़कर वो एक विधवा थी and widow of someone who is married outside the clan. और ऐसे की पुरुष की विधवा जिसने अपने समाज से बाहर जाके शादी की। And in those days, I'm sure marrying outside the clan is not easy. तो उन दिनों में वो समाज से बाहर जाके शादी करना एक मुश्किल काम था। It is very, very difficult for the whole society, family, everyone's against you. कि जब पूरा समाज पूरा परिवार आपके विरोध में हो जाए। And if you don't believe me, ask Radhika. अगर विश्वास नहीं होगा तो मैं से पूछे। Yeah, I mean it's very difficult to marry outside the family. परिवार से बाहर जाकर शादी करना बड़ा मुश्किल है। And there was no men to support her in her life. There was no husband, and now there's no father-in-law. So there's no one. She's in a way helpless. और उनका सपोर्ट करने के लिए कोई पुरुष भी नहीं है, ना उसका सास है, ससुर है और ना उसका पति है। But from this helpless, hopeless condition, she has believed, slowly come to believe that there is hope and there is life back home in Bethlehem, in the God of Bethlehem. हाँ, लेकिन ऐसी दशा में भी उसने विश्वास किया कि बेथलेहम में आशा है, परमेश्वर में आशा है। That is why that famous verse of Ruth chapter 1 verse 16. इसलिए वो रूत 1:16 वचन जो प्रसिद्ध वचन है, Entreat me not to leave you, कि मुझे विनती ना कर कि मैं तुझे or to छोड़ जाऊं, return from following after you. कि मैं तेरे पीछे तुझे छोड़कर लौट जाऊं। Whither thou goest, जिधर तू जाए I will go. उधर मैं जाऊंगी। Whether thou lodgest, जहाँ तू टिके I will lodge. वहाँ मैं भी टिकूंगी। Your people shall be my people, तेरे लोग मेरे लोग होंगे and your God my God. और तेरा परमेश्वर मेरा That परमेश्वर। is the resolution of Ruth, and from that curse, she enters into a blessing. और ये रूत का जो निर्णय था और उससे वो श्राप से वो आशीष में प्रवेश करती है। And from having no hope, now she has a new hope. जहाँ उसे कोई आशा नहीं थी, यहाँ उसे नई आशा मिलती है। And all this happened by her faith in the work, in the word of Naomi. और ये सब नाओमी के बाद है, नाओमी के काम में विश्वास करने के बाद। Now coming to the seventh person, who is Boaz. जो सातवां किरदार है बोआज है। Boaz means strength within. बोआज का अर्थ है कि जो सामर्थ्य था। Yeah, strength within. Yeah. And if you read chapter 2 verse 4, we realize Boaz is a very godly man. 2:4 वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। And in verse 8, he's a kind and he's a very thoughtful man as well. 8 में कि वो बड़ा एक दयालु व्यक्ति है। And in chapter 4 verse 14, he marries Ruth. और 4:14 वचन में कि वो रूत से शादी करता है। Now it's not easy to marry Ruth if you remember. She is already a widow. यदि आपको ध्यान दें कि वो पहले से विधवा है। Not many people would want to marry someone who's already been married before. कि कोई जिसकी पहले से शादी हो चुकी है ऐसे से शादी करना नहीं चाहते। And on top of it, she was not a Jew. और उसके अलावा वो एक गैर यहूदी थी। But the fact that she had believed, sacrificed everything and come back, Boaz was big enough, man enough to say, I am going to marry her. लेकिन क्योंकि उसने अपना सब कुछ त्याग कर उसको नाओमी के साथ आई थी, तो बोआज ने इस बात का निर्णय लिया। So that's the 7 characters that we
sort of find in the book of तो Ruth. रूत की पुस्तक में ये जो 7 किरदार हैं हमने देखे, And now, what are we saying? What is the point of all this? इन सब बातों का जो पॉइंट है, We'll try and summarize in about 10 minutes. 10 मिनट में हम इसको देखेंगे। Two things, दो बातें हैं, or two ways rather. या दो रास्ते हैं। Number one, पहला, what happens to those who say that God is their king, but then act in a manner that says God is not my king? उनके साथ क्या होता है जो कहते हैं कि परमेश्वर मेरा राजा है, लेकिन काम ऐसे करते हैं जैसे कि परमेश्वर उनका राजा नहीं है। Yeah, so to simplify it, what happens to those who say God is my king and then they turn to the world? हाँ, कि जो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर मेरा राजा है, लेकिन फिर वो संसार के पीछे चले जाते हैं। So what happens to them is they lose everything. तो उनके साथ क्या होता है कि वो अपना सब कुछ खो देते हैं। We have to look at Elimelech. एलीमेलेक को देखते हैं, He lost everything. सब कुछ उसने खो दिया। He lost his land, अपनी जमीन उसने खो दी, his family, his friends. उसका परिवार, उसके मित्र उसने खो दिए, He lost his church. अपनी कलीसिया को खो दिया, Elimelech lost his testimony. अपनी गवाही को उसने खो दिया। Now what way? Now everyone says, don't be like Elimelech now. आप सब Till now, सब कहते थे कि एलीमेलेक के जैसे नहीं बनना है। Elimelech lost his testimony. अपनी गवाही को खो दिया, He lost his sons. बेटों को खो दिया, He lost his very life. अपने जीवन को भी खो दिया। I know there's one more thing that he lost. एक और बात उसने जो, Let us read Ruth chapter 4:17 all together. रूत 4 अध्याय 17 वचन सब एक साथ। And the women, और her उसकी neighbors, पड़ोसियों ने gave ये the name कहकर नाओमी saying, के एक बेटा उत्पन्न हुआ there है, is a son born to Naomi, and they call his name यिशै का Obed. पिता और दाऊद का दादा वही है। And we realize now that Elimelech lost his name from the genealogy of David. कि दाऊद की जो वंशावली है उसमें से अपना नाम भी उसने खो दिया। It is such a big thing. वो बड़ी बात है। He could have been there, उसका नाम वहां पर हो सकता था, but because his eyes were on the world instead of the Lord, his king, his name is not there. Now, whose name is here? Naomi's name is here. लेकिन क्योंकि उसने अपनी आंखें प्रभु से हटाकर संसार की ओर लगाई, उसने अपना नाम भी यहाँ पे खो दिया। यहाँ पर अब नाओमी का नाम, And it says there's a son born to Naomi. How? यह कहा कि नाओमी के बेटा उत्पन्न हुआ है। कैसे? Even Boaz is a relative of Elimelech. बोआज भी एलीमेलेक का संबंधी था। The very close, it's a kinsman. वो एक निकट रिश्तेदार था। Because he looked to the world, went to the world, Elimelech lost his testimony and his name from the record from the book. That is important. और संसार की ओर दृष्टि लगाने के कारण उसने अपना नाम भी खो दिया। So Naomi had a son as a boy, was Obed, who was the father of Jesse, who was the father of the great King David. तो नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है जो उसके पिता यिशै और दाऊद का। So we have to be very careful. If we say God is our king, but we look to the world and return to the world, then we lose everything, including, apart from our testimony, we lose our name from places where it should be. तो हम सावधान रहें कि जब हम प्रभु को अपना राजा कहते हैं तो हम संसार की ओर न जाएं, तो हम सब कुछ खो देंगे। That is the danger of it. तो इसमें ये खतरा है। But what about those who are cursed and hopeless, but we turn to the Lord and make them king? और उनके बारे में क्या कि जो शाप के अधीन है, लेकिन वो फिर कर प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु को अपना राजा मान लेते हैं। रूथ, they gain everything. उन्हें सब कुछ मिल जाता है। Have a new life, नया जीवन, new hope, नई आशा, new husband. नया पति। Doesn't mean you want a new husband all the time, but she got a new husband. समझ नहीं कि तुम्हें, She has a new testimony, लेकिन नई गवाही, new God. नया परमेश्वर। And then it is her name that gets written in the genealogy of not just David, in the genealogy of Christ. और What a privilege. और न केवल ये दाऊद की वंशावली में, बल्कि प्रभु यीशु की वंशावली में उसका Let us नाम read है। this all together. Matthew chapter 1 verse 5. मत्ती के अध्याय का 5 वचन, सब एक साथ पढ़ लेंगे। मत्ती के अध्याय उसका 5 वचन। सलमोन से राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज से रूत और ओबेद उत्पन्न हुआ,
और वैसे यीशु उत्पन्न हुआ। Wow. In the genealogy of Christ, we have Ruth there. हाँ, और मसीह की वंशावली में वहाँ पर रूथ को हम देखते हैं। So we have to remember, याद रखें, those who say God is our king, जो कहते हैं कि प्रभु मेरा राजा है, don't look to the world for help. तो संसार से Don't go to the world, because we will lose everything, including our testimony, our lives, our family, and we'll lose our name from where it should be. तो हम संसार के पीछे ना जाएं, क्योंकि हम अपना सब कुछ खो देंगे, परिवार, अपना नाम भी खो देंगे जहाँ पर हमारा नाम होना चाहिए। But for those, we are all cursed, we are hopeless, we are sinful, and God has sent a Naomi, a sister, a daughter, a wife to tell you that there is hope, and if you make God the king, you will gain everything. और उनके लिए जो श्राप के अधीन है, आशा नहीं है, वो जब प्रभु की ओर फिरते हैं तो उनके लिए प्रभु ने किसी को भेजा है, एक बेटी को, एक नाओमी को, प्रभु के बारे में बताने के लिए। And when you hear that good news, जब आप उस सुसमाचार को सुनते हैं, listen, ध्यान से सुनिए। Don't be like Orpah, who will listen a little and weep and kiss and go back. औरपा के समान ना बने कि उसने सुना, उसने आंसू बहाए और वो फिर लौट गई। Come all the way back with Naomi. नाओमी के साथ साथ पूरे रास्ते में आ जाएं। And then come to the place where there's plenty, there's house of bread, and where there is life and there's new hope and there is joy everlasting, and your name will be written in the book of life. और उस स्थान में आए जहाँ पर भोजन है, जहाँ पर आनंद है, जहाँ पर पूर्णता है, और आपका नाम वहाँ पर लिखा जाता है। That's one way to look at it. एक तरह से इसे देख सकते हैं। Another way to look at it, दूसरा अगर इसे देखें, is, see, the Bible is all about big people. बाइबल बड़े बड़े लोगों के बारे Look में, at all the names. नामों को देखें, There is kings, राजाओं के नाम है, there is prophets, भविष्यवक्ताओं के नाम है, great queens, रानियों के नाम है, judges, powerful judges, न्यायियों के नाम है, generals, और सेनापतियों and के, apostles, और प्रेरितों के, and all of them done mighty things. इन सब ने बड़े बड़े काम किए हैं। Ruth is probably one of the few, maybe the only book which is about very ordinary people. रूथ शायद एक ऐसी पुस्तक है जो बड़े साधारण व्यक्ति के बारे में, Ordinary people like you and us, and like all of us. हम सब के समान एक साधारण। There is nothing extraordinary happening in this book. इस पुस्तक में कुछ ऐसा अद्भुत नहीं हो रहा है। It is a book about hunger, ये भूख के बारे में, finding a new job, नई finding husbands for your wives and wives for your husbands. पत्नी के लिए पति, पत्नी के लिए। It's about regular, ordinary things. ये रोजमर्रा के कामों के बारे में। If you look at the story, nothing happens. One guy is hungry, he says कि दूसरा जगह जाके नौकरी ढूंढते हैं। एक यहाँ पर व्यक्ति है जो खाने के लिए कुछ है नहीं, तो वो दूसरी जगह जाते हैं। And they go there, वो जाते हैं, and then sickness happens, and one dies, बीमार हो जाते हैं, मर जाता है, and then the children get married, बच्चे शादी कर लेते हैं, and then the man and the children die, और बच्चे भी मर जाते हैं, and they say, now I think maybe we should go back, और अब कहते हैं कि मतलब चलो मैं and they come back, वो लौट कर आ जाते हैं, and again they get married, दोबारा शादी होती है, and that's the story. और यही कहानी है। There's no fighting happening, इसमें कोई लड़ाई there's नहीं हो रही no है, parting of Red Seas, कोई लाल समुद्र पे there's no killing hundreds of Philistines with the jawbone of an ass. आगे वहाँ कहते हैं कि जबड़े गड्ढे से फिलिस्तीनियों को नहीं मारा गया। Nothing big is happening. कुछ ऐसा बड़ा नहीं हो रहा। Very ordinary things that are happening, like it is happening in our lives. जैसे हमारे जीवनों में होता है, वैसे साधारण बातें यहाँ पर हो रही। But you know, out of the simple, ordinary things and simple, ordinary people, God has done something extraordinary. लेकिन इस सरल बातों में साधारण लोगों से प्रभु ने अद्भुत काम करवाए। And you know what is the extraordinary thing that God did from the ordinary people like Naomi and Ruth? नाओमी और रूथ जो साधारण व्यक्ति हैं, इनके जरिए प्रभु ने क्या किया? He made the prophecy of Micah to come true. मीका की जो भविष्यवाणी है उसको सही साबित किया। Micah 5:2, please. मीका 5 अध्याय उसका 2 वचन। Obadiah, Jonah, Micah. ओबद्याह, योना, मीका। Every time we have to say, sir, I remember that the grand old book goes in my head furiously. Micah 5:2. मीका 5 अध्याय उसका 2 वचन। Anyone who finds it can read it, please. हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तो ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। Yeah.
It says, out of Bethlehem of Judah is going to be born the Redeemer, the King everyone's waiting for. हाँ, यहूदा के बेथलेहम से वो उद्धारकर्ता जन्म लेगा जिसका सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। If Naomi had decided to stay in Moab, अगर नाओमी फैसला करती कि मोआब में ही रहेगी, this prophecy wouldn't have been fulfilled, तो ये भविष्यवाणी पूरी नहीं हो पाती and technically there would have been no Redeemer. और वहां पर कोई उद्धारकर्ता भी नहीं होता। Secondly, if Naomi had decided to return and Ruth has said, I'm going to stay back, दूसरा, अगर नाओमी लौटने का फैसला कर लेती और रूथ कहती कि मैं यहीं रहूंगी, this prophecy wouldn't have been fulfilled. तो भी ये भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। But through these ordinary people going about their ordinary lives, God has done an extraordinary thing to fulfill the prophecy, because of which today Christ was 22,000 years ago, Christ was born in Bethlehem. Prophecy fulfilled, and now we have a Redeemer. लेकिन इस इन साधारण लोगों के इस निर्णय के कारण प्रभु ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया और आज हमारे लिए उद्धार करता है। Ordinary people साधारण लोग going about in ordinary lives, अपने सरल रोजमर्रा के जीवन में जी but रहे we हैं। have a God who can do extraordinary things through his ordinary lives. लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है कि साधारण जीवन से असाधारण बातों को वो कर सकता है। So let us be very careful हम सावधान रहें and let us be attentive to what the Lord wants from us. तो प्रभु हमसे क्या चाहता है उसके प्रति हम जागरूक रहें। The Lord has given us the privilege of sending people to say, come to a place where there is hope. हाँ, प्रभु ने ऐसे लोगों को हमें दिया है कि जो हमें कहते हैं कि वहां पर चले जहाँ We are in sin, we are in curse, हम but पाप there में is a place, there's someone who can redeem you from all of them. हम पाप में श्राप के अधीन है, लेकिन ऐसी जगह है जहाँ पर कोई हमें छुड़ा सकता है। There is a place where you can make the Lord your king. ऐसी जगह है जहाँ प्रभु को आप अपना राजा बना सकते हैं। And a sincere prayer is, when you hear that, if you're hearing that, अगर आप ऐसा सुन रहे हैं या जब ऐसा सुनते हैं, be it from your children, चाहे बच्चों से be सुने, it from your husband, चाहे अपने पति से be सुने, it from your wife, चाहे अपने पत्नियों से be सुने, it from a neighbor, चाहे अपने पड़ोसी से सुने, we should hear that हमें ध्यान दें and come to the Lord. प्रभु के पास आए। And for those who come to the Lord, और जब प्रभु के पास आते हैं, our ordinary lives can be used to fulfill the prophecy of Christ being born in a certain place. और हमारी साधारण जीवन उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि जहाँ प्रभु And our lives similarly can be used to make Christ be born in the hearts of many. और हमारा जीवन इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है कि हम लोगों के मनों में प्रभु को जन्म दें। The Lord bless you all. प्रभु आशीष दे।